So I found a clip where Rohit Shetty is talking about, how Bollywood remakes South Indian films. That'll be interesting discussion to hear. It's a clip from the Rinvi Show podcast. I'll put the link to the description below. You can check it out there. But let's hear what he has to say. By the way, channel membership is live. If you want to support the channel, consider becoming a member. Get early access to videos and some member-only videos such as song reactions. To know more, click on the join button. So let's check it out. आपको क्या लगता है बॉलीवुड में और कॉमेडी फिल्म्स अभी रिलीज होंगी क्योंकि दुनिया भर एक ट्रेंड चल रहा है कि पीपल हैव स्टॉप मेकिंग कॉमेडी Horror comedies now because of Stray 2. फिल्म्स Actually, I believe in one line for where Hindi film industry is concerned, Okay. or any industry for that matter. Film select, nobody knows anything. अनप्रेडिक्टेबल That's true. That's 100% true. Unpredictable. सिवाय Nobody. और जो काम कर रहे हैं ना वो बात ही नहीं करता. जो नहीं काम कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है. बहुत ज्यादा ज्ञान है कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा. अब साउथ का रीमेक नहीं चलेगा, दृश्यम 200 करोड़ कर लेती है. अभी बिग स्केल ही चलेगा. Drishyam, I've said many times before. It's the connection the first film had before the OTT era, before everything else. Most people in Hindi had seen the Hindi remake, right? So they can, and even the way they marketed Drishyam too, right? Bringing back the nostalgia of the first one, and that definitely was a hit. People were talking about it. Oh, such a cool thriller. They didn't know it was a remake, and then second directly came on OTT. It was just Malayalam, Hindi dub wasn't, I think, available. So all of these things matter, and you have this connection with this character, with the actors we saw, with Taboo, with Ajay Dev, and all of that. So the connection, if they had only seen first one, they would not feel the same with Drishyam 2, the original one with Mohanlal. Because, and even I have actually made a whole comparison. You can check it out. The whole lot of subplots and elements which make the film actually two distinct films. Yes, the main plot is same. Everything, twists, turns, everything is same. But there are a lot of small changes which changes a lot actually. यही होगा और फिर दृश्यम 200 करोड़ कर लेती है. कैसे? It was an outlier. तो किसी को कुछ पता नहीं. आप अपना काम करते रहो, जो आपका कन्विक्शन है उससे काम करो. अगर सही बैठा तो सही बैठेगा, नहीं बैठा तो नहीं बैठा. हाँ, और 90% लोगों की मत सुनो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता. क्योंकि अगर सबको पता होता, रणवीर, तो हमारा रेशो 7% सक्सेस का नहीं होता. Wow. या 10% सक्सेस का नहीं होता. हम 260 फिल्में साल में बनाते हैं पेंडेमिक के पहले. अब वापस वो शुरू हो जाएगा और हमारा सक्सेस रेशो 10 का है. हम That means 26 films out of 260 are successful. Successful, not blockbuster or something. Successful, that means they made the money or they made the profit or they break even and more. 20 फिल्में भी सुपर हिट नहीं बनाते हैं साल में. हम 10 ब्लॉकबस्टर्स बनाते हैं, जिसमें से 4 होंगी जो 100 करोड़ होंगी, 2 होंगी जो एक रोहित शेट्टी की आ जाएगी, एक कोई आउट ऑफ द ब्लू है ना निकल के आएगी, सरप्राइज पैक होगा कि अरे ये फिल्म इतनी बड़ी कैसे होगी. क्यूमुलेटिवली आपको जब साल खत्म होता है तो आपको 10 फिल्में याद रहती, 5 और याद रह जाएंगी जिनका जो चली नहीं है लेकिन उनका कंटेंट बहुत प्यारा था. तो हमारा रेशो, अगर हमारा रेशो 10% का भी नहीं है तो लोग कैसे बात कर सकते हैं? उन्हें किस तरह की नॉलेज है और कहाँ से है ये नॉलेज? तो मतलब, और हमारे यहाँ, और ये मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जो काम नहीं कर रहे वो ज्यादा बात कर रहा है. अब ये सब ऑब्जर्व करते थे बचपन में. बिकॉज मतलब मैंने काम शुरू किया when I was 16 and a half, and my dad, because of my dad being an action director, वो पूरी जो एक cultural. I do feel he doesn't get enough credit. Like, he has been working in the industry for such a long time. Yes, he has his own style of telling films and very loud and over the top, and like my favorite is Singham of his first one. I really enjoy it. Now rewatching, there are some portions like I don't like these portions, but the main story focus points are really good. But I think he doesn't get that credit, and there are reasons maybe for why not. Some people really look down upon his work, but I think it works for someone, right? Like, you cannot be that narcissist that if I think it is not good, it's not good. Like, even if a Salman Khan movie comes out and it's very average, there are people who enjoy that, and it's okay. Let them having fun. Like, you always think that it standards should be raised and this and that and all of it. But if the actor only and the makers behind it, that Kisi Bhai Kisi Ki Jaan, I didn't watch it, but it did, I think, on the first weekend 30 crore in a day, and it's still kind of because of the fandom of Salman Khan. And there are people who watch it, and okay, right, if there are people who want to watch it, let them watch it. Like, I don't want to ridicule anyone for watching anything, which I don't think is right or whatever. I don't think that's also something toxicity is there about it. That,
this is good cinema, only this is good, and only this should be watched. If you're watching something else, you are shit, and you are this and that. Like, let's not get into it. If someone likes it, let them watch. No, why do you care? You what I think, I can share my point of view about a film, but if someone else has a different point of view, that doesn't mean they are below or they don't know more and I know better. And let's not get into all that. इंडस्ट्री से रहे, मतलब आई डोंट नो द डे जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म्स में आना, मुझे लगा यही मेरा काम है, यही करना है मुझे. ओके, डायरेक्टर ही बनना था. एक्शन डायरेक्टर. ओके, फिर डायरेक्टर कैसे बने आप? वो एक्सीडेंटली बन गया मैं, मतलब मैंने शुरुआत उससे की एंड देन एक्शन डायरेक्शन में ज्यादा रुचि आई एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, और अब दोनों कर लेता हूँ. ओके, इसलिए आपकी मूवीज में इतनी ज्यादा एक्शन होती है. वो मेरा बचपन का फ्रस्ट्रेशन हर बार निकल जाता है. उड़ाओ, मेक इट एक्सप्लोड. वो एक दो बार किया, देन पीपल किड्स स्टार्टेड लाइकिंग इट. या आई वाज लाइक चलो करते हैं. सम किड्स ग्रू अप वाचिंग इट. या एंड लाइक सर्कस देयर इज नो एक्शन, उसमें गाड़ियां नहीं उड़ रही. आप कह This is before circus, okay? रहे हो, आई डोंट नो. नहीं सर्कस में नहीं है. ओके ओके, ठीक है. क्योंकि उस जमाने में कल्चरली वैसा एक्शन नहीं था. ओके ओके ओके. 60s में ना वो वैसा नहीं था. वाओ. ओके, आपने मेरे को एक अलग ट्रिप में पहुंचा दिया, पर मैं आपको आपके फॉर्मूला के बारे में पूछना चाहूंगा. जो आपने ये हाईलाइट किया कि 10 फिल्म्स हिट होती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तो ऐसे भी सम डीपर फॉर्मूला रिवील कर दो सर. कोई फॉर्मूला नहीं है यार, मैंने बोला ना. He is actually, until circus, he's actually one of the most successful actor in Bollywood. I think he 13 hits back to back, if I'm not wrong, something like that. The chosen one and that's why I'm humble. एक मिनट, तो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं? मेरे दिमाग में आते हैं, कोई फिल्म देखता हूँ और ना ये कई बार होता है, मतलब कि वो एक तोहमत लग जाती है कि ये तो रीमेक ही कर रहे. वो बट ऐसा होता नहीं है. वो एक बिजनेस डील होती है. कई बार जब फिल्म साउथ की फिल्म बन रही है या हमारे यहाँ से फिल्म बन रही है, करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं उसमें. वो होता है ना, अरे कॉपी करके बना दिया, ऐसा नहीं होता. इट्स लाइक अ बिजनेस डील कि हम ये फिल्म बना रहे हैं कि आप लोगों को बनाना चाहेंगे, ये हमारी स्क्रिप्ट है, या बनने के बाद दे कम टू अस कि ये हमारे पास ये एक स्क्रिप्ट है, आप देखिए. I think, yeah, sometime like in 2000s or 90s, there were a lot of copying, like blatantly copying things and all. Like there were no, contracts, no remake rights for bought and all. But now I think everything remake, everything it's done, it's a deal, it's a contract. There's money involved. Like it's not like you're copying or plagiarism and all of that. यही हमारी फिल्म है. करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज इन्वॉल्व, नॉट लैक्स. सो इट्स लाइक अगर हमारी फिल्म यहाँ पर हिट होती है, और ऑब्वियसली जो पब्लिक है उनको नहीं रियलाइज होता है ये तो, और जो फ्यू ऑफ द मीडिया पीपल वो उसको एक कॉपी का टैग दे देते. ऐसा नहीं होता है. जैसे सिंघम भी जब बनी तो सिंघम रिलायंस ने वहाँ प्रोड्यूस की थी, फंड की थी वो फिल्म, तो जाके वो हमारे पास आई और फिर उसको हमने चेंज किया. इफ यू सी द ओरिजिनल सिंघम और हमारी सिंघम अलग है. सेम थिंग हैपेंड विद सिम्बा आल्सो. Okay. सिम्बा में अगर आप देखें तो बिगनिंग में टाइटल ओरिजिनल राइटर का नाम आता है और प्रोड्यूसर का That's good. नाम आता है, बिकॉज इट वाज अ बिजनेस डील. सो इट वाज नॉट कि अच्छा रात को फिल्म देखी और सुबह बना ली, ऐसा नहीं. एंड सेम थिंग यहाँ से भी होती है, बट वो होता है ना कि अच्छाइयों की जगह बुराइयां ज्यादा हाईलाइट होती हैं. तो कोई चेन्नई एक्सप्रेस की बात नहीं करेगा, कोई गोलमाल अगेन की बात नहीं करेगा, कोई सूर्यवंशी की बात नहीं करेगा, कोई गोलमाल 3 की बात नहीं करेगा, जो साउथ में हमने बेची है और बनी है. गोलमाल 3, बोल बच्चन, यस इट वाज ऋषिदास गोलमाल, बट फिर वो बोल बच्चन जो बनाई हमने, वो हमने फिर साउथ में तेलुगु में रिलीज हुई, तेलुगु में हमने उसके राइट्स बेचे हैं. एंड उसी तरह से That's interesting. Even I didn't know many of those. बहुत सारी फिल्में. But I know like it has happened, it happens. But I guess it doesn't make that much noise. Like those films, like the remake of Bollywood films in South haven't made like such a big name that you're like, oh, but it's actually remake. Like Andhadhun got remade like few times now. So that's a film that I know it has been remade many times. वहाँ भी बनती है, यहाँ भी बनती है, बट इट्स नॉट लाइक वो एक तोहमत लगा दी जाती है कि अच्छा इन्होंने देख के बना दिया. ऐसा नहीं होता है. इट्स लाइक अ प्रॉपर पेपर वर्क, इट्स लाइक अ प्रॉपर बिजनेस डील, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अस इट कम्स फ्रॉम देयर. ओके. मैं इंजीनियर हूँ, मैं हर चीज को एक इंजीनियरिंग के नजरिए से देखता हूँ. आई एम स्टिल ट्राइंग टू कम अप विद योर फॉर्मूला, क्योंकि आई फील कि कुछ तो फॉर्मूला, एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स है. फॉर्मूला आई वुड से फॉर्मूला ऑडियंस देती. या आपकी ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आई डू टेलीविजन. सो पहले वो रोहित शेट्टी नाम था और फिर वो रोहित शेट्टी को एक फेस मिल गया बिकॉज ऑफ टेलीविजन, तो लोग आपको जानते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं. Used to come, I think, on Judge, like as comedy shows, and then he also did Khatro Ke Khiladi and all of that. गोलमाल 3 रिलीज हुई थी. आई वाज एट आई थिंक चंडीगढ़ एयरपोर्ट, या हाँ, एंड वन गाय केम टू मी कि कैन आई टॉक टू यू. हाँ, मैं वेट कर रहा था एयरपोर्ट पे, तो इज लाइक कि मैंने गोलमाल 3 देखी एंड आई वांट टू से थैंक यू टू यू. एंड ही वाज लाइक 40
42 दिन पहले 42 डेज पहले 43 डेज पहले मेरे डैडी की डेथ हुई. माई मॉम वेंट इनटू अ डिप्रेशन. एंड 40 डेज जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होता है कि या तो 13 दिन के बाद लोग बाहर निकलते हैं या 40 दिन तक उस चीज को के बाद दे कम आउट. सो ही सेज कि माय मॉम वाज लाइक इनटू टोटल डिप्रेशन एंड ऑब्वियसली इतने साल का साथ रहा होगा उनका भी अपने हस्बैंड के साथ. तो एंड तो मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि क्या करें मम्मी के लिए. एंड गोलमाल का हमने ट्रेलर देखा तो बोले चलो पिक्चर ले जाते हैं. ऐसे थिएटर में मैंने पहली बार अपनी माँ को हंसते हुए देखा आफ्टर 42 days. Wow. Then I was again at the airport. That tells you, right, like what cinema can do. Like, again, as I said, you should never look down on anything. Like, for someone, as you said, right, Golma 3, it was actually fun movie, some parts of it. But maybe I'm not a big fan of it. I'll not watch it again every time. But there is someone out there who it really connected and they really enjoyed and they actually changed their life in this sense, right? Even if it's one story, forget there are many like this. Just one story. It's worthy enough for the film to exist. Forget the money, forget the everything else. If that, like, a film could change life, that is the biggest validation a film can get. And one lady came to me and said, I want to say thank you to you. Same. बोले आई हैव अ डॉटर, आई एम अ होम मेकर, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी बेटी है आई थिंक 2 या 3 साल की. तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं घर में, मुझे काम करना है तो मैं चेन्नई एक्सप्रेस लगा देती हूँ. वो 2.5 घंटा मेरी बेटी बैठी रहती है, मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ. और हमने 4 DVDs, उस जमाने में DVDs थी, बोले इतनी घस गई है कि चौथी DVD अभी खरीदी है. सो दिस इज व्हाट यू लर्न एंड यू रियलाइज. One lady came to This reminds me of, I had like CDs, 2 CD of Mehuna, part 1, part 2. And we just had one, so we just to keep playing it, and I think one got corrupted, so only one, I think part 1 got corrupted, part 2 was there, so we just used to play that. that was old days. me कि whenever your film is on satellite, यानी कि टीवी पर है, तो मुझे रिमोट अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ फ्रॉम हियर यू लर्न कि ये मेरी ऑडियंस है. एक तबके के लोग हैं जो मेरी फिल्म नहीं पसंद करते, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट. हर आदमी की एक अपनी चॉइस होती है. मैं जो और आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है बहुतों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है. जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इनको केटर करना है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लोग हैं और मुझे इनको केटर करना है, मुझे सबको नहीं करना है, मैं पूरी दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकता हूँ, बट मैं इनके लिए मेहनत करूंगा और इनके लिए काम करूंगा. आई थिंक दैट इज द रीजन दैट आई एम सक्सेसफुल. और मैं हमेशा उनके लिए ही सोचता हूँ कि नहीं यार, ये, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सेक्स सीन कुछ गलत है या स्मूचिंग कुछ गलत है, बट मेरी वो ऑडियंस नहीं है, वो मेरी ऑडियंस नहीं है. तो मैं, और मुझे पता है कि ये मेरी ऑडियंस है. कई बार ये भी हो सकता है कि उनको भी नहीं पसंद है जो मैंने बनाया, बट मैं एक सेगमेंट को केटर करता हूँ. एंड that what he said about some sequence, like, I also find it sometimes hard because there are moments like, my grandparents are visiting and I'm wondering, like, oh, should I show them this film? Like, oh, that film has this moment or this scene and there's some bad words, like, what to do? Maybe they're not there, but like, I cannot show them something because of those things. And it's not that they will say something or like that. It's like why to create an uncomfortable position, right? Like, I've reached with my parents, I've reached a point where, we are okay. Like, if a scene comes, we can maybe forward it, or a bad word comes, like, just we don't really, get awkward, just move on, let's move on. It's become a little normal, but it's taken time. But if I knowingly know there's some things like that, and that's why I try to watch films or series by myself first. If it feels good, then I can watch it with family, then it becomes better. But there are many things I don't think I find it better to watch, right? So if and shows like Good Luck, or shows which even Panchayat has a few moments had some bad words, but it's normal, very simple. So you can not really enjoy a lot many things with them, and which I find nowadays, it's harder and harder. The more things come out, like, more there are less things to actually watch and sit together, so that actually makes it sad. By the grace of God, वो segment is like 80% of the business. That was interesting. I think the question I think was wanted was like, why not create your own? Why do remakes? I think that should have been the question. Why not make original content? Like, not that they haven't made, they have, but why go to remakes? Like, remake should, like, remove the fact, like, you can remake films. Remove the fact that remake is not an option at all. You have to come up with original stuff. And maybe that's because that's a long run thinking, right? Try to create a habit of making original stuff. Like, if you keep
if something is not working, this is not working, let's make a remake. That should, it's a small term thinking that nothing is working, just to make, remake stories, their risk is less, let's make it. If it makes money, great. We get a big actor, this and that. Like, it's just small term thinking and not gonna help anyone. But sometimes I do feel remakes are good when, if that original is very niche and it needs to be, culturally changed for a different audience, then I feel it should be, if it's a story that should reach everywhere. But most of the times that's not the case. Most of the times a big, film. But I think nowadays with pan India, with the OTT access, its availability, everything, things are changing. And with social media, everyone knows if it's a remake. They already, like, remake has become a negative term now. No one wants to do it. There's still some in work, but hopefully let's see what happens. But most probably, like, I think that remake culture will go and hopefully die away. But this was interesting. Again, some interesting things we talked about. I would love to know your thoughts about it in the comments below. And you can check out this video next. I will see you next time.